They say that India lives in her villages. Almost 70% of our country is rural. And while urban India has grown, rural India has not seen the same type of growth. Spread over our vast nation, many rural communities live in relative poverty, with little access to services like schools, hospitals, or sanitation. For India to truly rise, our rural economy needs to grow. And science and technology can play a big role in this transformation. In this film, we explore ways in which science can help improve livelihoods and the quality of life in rural India. The science doesn't always need to be high-end. Sometimes simple innovations can touch and change lives. And so we will travel across the country, from Telangana to Gujarat, from Punjab to Maharashtra, to see how science is for everyone and how science can create inclusion. We start off our journey through the parched countryside of the Nalgonda district in Telangana, where water, the basic source of life, was disabling the community in terrible ways. Many members of the community have developed skeletal deformities by drinking the local water. How can water, the source and sustainer of life, do this? Because it had fluoride in it. And by drinking this water, many people in the community suffered from a disease called fluorosis, which leads to dental issues when consumed in moderate quantities and to severe skeletal problems when consumed over the long term. ఏం బాధలు అంటే నీళ్ళ గురించి నీళ్ళు తాగితే ఈ కాళ్ళ నొప్పులు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ గుంజుతాయి పండ్లు పుచ్చిపోతాయి. Now, why is the water in this area so bad? Some experts believe that the root cause of fluorosis is the extensive use of bore wells in this region. Earlier, the major source of water in the district was open wells or lakes. But over the last 2 decades, people have been digging bore wells, which have penetrated the subsurface level where there is a high fluoride content. And this is one of the worst affected districts in the country. మాది మొత్తం ఫ్లోరింగ్ గురించి మోకాళ్ళ నొప్పులు, ఈ నడుము నొప్పులు, ఈ పండ్లకు కందులు వస్తాము, ఈ పండ్లు పుచ్చులు పోతాం, ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఎక్కువ మాకు. దాని గురించి అబ్బాయికి అట్లా అయింది. ఆ ఫ్లోరింగ్ గురించి మొదటి సందే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది తాగినాక కొద్ది రోజులు నడిచినాయి, అది ఏమంతా తాగలేము మేము. మొదటి సందే ఇవి. What then could be done to set this problem right? The Indian Institute of Chemical Technology worked out the mechanisms to set up a low-cost groundwater defluoridation plant. Now, this plant uses reverse osmosis to reduce the concentration of fluoride in the water so that it becomes safe for human consumption. How does reverse osmosis work? Basically, there's a semi-permeable membrane that allows the passage of water molecules but not dissolved impurities like salts and bacteria. To push the water through the membrane, there needs to be pressure applied that allows pure water through while holding back a majority of the contaminants. The project has been funded by the Department of Science and Technology. This technology has the power to remove all impurities in a single step. The other advantage is the low operating cost, which is less than 7 paisa per litre of purified water. These plants have served a purpose like providing safe water for a period of 5 to 10 years. Most of them have been running for 5 to 10 years,
and by the time the piped water has reached to remote villages, these plants have been able to intermittently provide the safe drinking water to the local population. The IICT team made nearly 50 visits to different villages for plant installation and to overcome challenges such as lack of power supply, low voltage, as well as the lack of awareness and cooperation from local people. But the efforts have paid off. The change and hope in the community is tangible. So Nalgonda is the worst affected district as per WHO statistics because it contains fluoride up to the maximum solubility of calcium fluoride of 20 milligram per liter, and due to technological intervention by the CSIR Indian Institute of Chemical Technology, these fluoride levels have been brought down to less than 0.5 ppm, which is acceptable as per the WHO standards for fluoride in groundwater. TDS levels have also been brought down from a level of around 700 to 1500 to about 60 to 70 milligram per liter, which is quite acceptable for drinking. Access to water, such a basic right, and made a reality for the villagers in this district by simple, accessible technology. What else can science do to create change and inclusion? We travel across the country to Mali village in the Kandi region in the state of Punjab. The farmers here cultivate the desi rose. रोज है जो गुलाब है, देसी गुलाब खास करके, इसमें बहुत अच्छा खूबसूरती ये है कि इसमें फ्रेग्रेंस होता है, महक होती है, हर मंदिर में, हर गुरुद्वारा में यूज होता है. But there was a surplus of roses. Could they be used then to further supplement the income of the villagers of this area? गुलाब हमने खेतों में लगाया, खेतों के जैसे बट्टों के ऊपर, बन्नों के ऊपर, लेकिन फूल तो लग गया और फूल का करें क्या हम लोग. A group of researchers in the Punjab Agriculture University at Ludhiana came up with a process by which rose sharbat could be prepared using fresh rose petals along with water, sugar and citric acid. रोज शरबत को जब मैंने बनाया तो उसके अंदर जब टेस्ट कराए तो उसके अंदर इतनी अच्छी खूबी निकली, एंटीऑक्सीडेंट मोर देन 80%. उसका जो एसिडिटी लेवल है वो लेस देन 1% होना चाहिए, इसका 0.3 है, और मोर देन 1 ईयर, मतलब कहीं लगभग 2 साल तक इसको सेल्फ लाइफ रहती है. घरों में हर आदमी नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकता है. Once this process was fine-tuned, it was shared with the women of a self-help group in the community. These women were taught the process and shown how to adhere to certain quality standards. ना कोई कलर डालना है, कोई बाहर से कोई चीज़ लेकर डालनी, सिर्फ फूल लिए, ताज़ा फूल लिया और उसको बॉयल किया, बॉयल करके बस उसका करके निकाला, उसमें शुगर ऐड कर दी और बाद में उसकी बोतल निकाल दी. इतना अच्छा प्रोसेस. This rose sharbat clears toxins. It has a cooling effect and is a source of instant energy. It is 100% natural with no synthetic preservatives or food color. In spite of this, the shelf life of the sharbat is 1.5 years. The women in the group managed to sell 7,000 bottles of sharbat in 2017-18. अचार, चटनी, मुरब्बा, कोई भी काम हम करते हैं उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है जितना हमने देखा. जैसे रोज शरबत है, रोज, और मेहनत भी ज़्यादा नहीं है और प्रॉफिट भी आराम से 15 से 18 लाख का टर्नओवर है. The creation of value-added products like this from local produce truly gives the women in the community and the local farmers access to a new kind of livelihood. Increased income, a sense of empowerment, and a hope of more choices. A lot riding on the back of a bottle of sharbat. Our next story is also in Punjab, in Ludhiana.
But the innovation we're about to explore could touch farmers across the country. Now, most farmers in India are small scale and struggle to manage all the work required on a farm. Also, data shows that finding labor is going to be increasingly tough with current migration trends. In this scenario, mechanization could hugely help the farmer reduce their workload and increase both efficiency and productivity. We traveled to CSIR's Central Mechanical Engineering Research Institute in Ludhiana to explore some innovations. We have been known for the tractor technology. It is a farmer-centric. We do a lot of work for the villagers, common people. And this institute has developed more than 100 technologies. In recent past, we have transferred almost 33 technologies to number of small-scale industries so that the unemployment can be reduced. To come up with these innovations, the scientists here collaborated with a host of agricultural universities, as well as other industries, to find answers that could address specific problems of the farmer. For example, the inter-row rotatory cultivator, which helps destroy weed between the rows of plants without damaging the crop. In addition, a 3-row precision planter for the proper sowing of vegetable seeds. Innovations in irrigation and tillage have also been worked on. The idea here is to focus on design improvement, rapid prototyping, engineering documentation, and collaboration with other manufacturers in order to scale up production. If these innovations manage to reach small-scale farmers across our nation, it could really make a difference in a real, tangible way to their lives. Let's move now to Gujarat, to a community of craftspeople who have been using traditional techniques to create terracotta artifacts for centuries. But without access to modern technology, they were struggling to make ends meet. Their designs were not working for a modern market. The marketing end of the product was also a challenge. मेन जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि इसमें मेहनत बहुत काफ़ी है और ये चाक के ऊपर काम करते हैं तो मेहनत है और उसमें क्वालिटी नहीं निकलती है और प्रोडक्शन बहुत कम लगता है. The scientists at CSIR's Glass and Ceramic Research Institute in Ahmedabad decided to intervene to try and revive this art form. कन्वेंशनल जो सिरामिक पॉटरी लोग बनाते थे बहुत पुराने सालों से, आज धीरे धीरे वो लुप्त हो रहा है. सेंट्रल का सिरामिक इंस्टीट्यूट कोशिश किए थे. इस लुप्त होने के लिए जो कारण था उसको हम लोग पहले से सोच के देख के हम लोग एक नया तरफ से एक साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है, जिसके तहत हमने अलग अलग रूप से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की हिसाब से हमने टेराकोटा पॉटरी को एक नया रूप देने की कोशिश किया है, जिसमें लोगों की रोजगार मिले, लोगों के अंदर एक उत्साह बढ़ावा मिले और साथ साथ नए जनरेशन जो लोग जो ये ट्रेडिशनल आर्ट छोड़ चुके हैं वो फिर वापस आ सके. How could science make the life of the potter here easier? Well, most of these potters used a hand-operated wheel. Could simple mechanization simplify their lives? A shift was made to a ball-bearing based wheel or an electrical chuck. The artisans were trained in areas like clay characterization, processing of clay, various forming and shaping techniques like slip casting, throwing on a potter's wheel, pressing, plugging, and related technical features. Simple, effective interventions like the creation of a mold made the whole process less strenuous, especially for women artisans. कास्टिंग पद्धति का फ़ायदा ये है, ये काम
लेडीज़ जेंट्स कोई भी कर सकता है और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा निकलता है। इसकी वजह से इसकी आमदनी में और इसका वैल्यू एडिशन काफ़ी अच्छा है, तो उसकी आमदनी में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। Ideas were given on how to broaden the kind of designs to appeal to a modern day audience. The community were also advised on packaging, marketing, and given inputs on how to run a business. पहले मैं बाहर जाके काम कर रहा था, अभी ये इधर गांव में आया तो मैंने देखा ये 5 दिन का प्रोग्राम है, मुझे अच्छा लगा। टेराकोटा जो सामान बन रहा है वो ज्वेलरी है, बोतल है, ऐसे ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अभी मेरे को बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। Terracotta is a completely biodegradable material, and so, along with improving livelihoods and reviving handicrafts, it also gives us a much needed green solution. Our next story takes us to the kitchens of rural India. To the stove or chula, which millions of Indians use. Almost 85% of rural households burn solid fuels like wood, cow dung, or crop waste for cooking. The soot generated in the process is hugely detrimental to health. Respiratory diseases and lung infections are common consequences of exposure to fumes from cooking. This affects over 800 million people in India, with over 1 million deaths annually. In addition, greenhouse gases like carbon dioxide, methane, black carbon particles are all products of incomplete combustion of solid fuels. And so scientists needed to come up with a cheap biomass-based chula that could be sold, distributed, and used in millions of diverse households. We traveled to Nagpur to explore one such option. The National Environmental Engineering Research Institute, run by CSIR, has developed a multi-fuel cook stove called Neerdur, which may be helpful in controlling indoor air pollution. निर्धूर की जो पहली विशेषता है कि वो अनेकों प्रकार के ईंधन ले सकता है, जो फ्यूल है अनेक प्रकार के। सहसा हम लोग लकड़ियां जलाते हैं, तो लकड़ियां आप यहाँ सामने से डाल सकते हैं और ये जो नॉर्मल सिगड़ी या नॉर्मल चूल्हा होता है उसकी तरह आप जला सकते हैं। यदि आपके पास में वुड चिप्स या लकड़ी के टुकड़े हैं या फिर कोयला है तो उसको आप ऊपर से फीड कर सकते हैं। हमने इसका जो कंबशन चैम्बर उसको साइंटिफिकली डिजाइन किया है। तो एक कंबशन में क्या होता है कि प्राइमरी एयर का पैसेज होना चाहिए, तो नीचे हमने कुछ होल्स दिए हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो प्राइमरी एयर यहाँ से मिलेगी। उसके अलावा हम लोग एक एडिशनल सेकेंडरी एयर देते हैं जिससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो अनबर्न फ्यूल रहता है आपका वो वहां पे जल जाता है, तो और दूसरा आपके इमिशंस कम होते हैं। Options like this help in the saving of fuel by increasing thermal efficiency. Now combustion is also better in this stove. Existing stoves being used by rural women are tightly packed by bricks, which result in inefficient air supply, which in turn hinders proper combustion. Neerdur, on the other hand, has provisions for increased air supply, since it has a combustion chamber. इसमें हम देखते हैं कि लकड़ियों की खपत 50% से भी कम हो जाती है। धुएं का उत्सर्जन इस लेवल तक नीचे गिर जाता है कि जिससे आपके स्वास्थ्य को प्रभाव कम हो जाता है। अब आप देख रहे हैं इसमें एक जाली भी दी गई है। ये जाली से इसका सतह का तापमान नीचे रहता है, जिससे बच्चे और खाना बनाने वाले अगर इसको छू भी लेते हैं तो उनके स्वास्थ्य को कोई या जलने की कोई भी तकलीफ नहीं होती। These stoves have been distributed in villages in Nagpur to see how they work for community before more large-scale distribution. If it works out to be a viable solution, it will help rural communities in numerous ways. Better health, less fuel, more efficiency,
and a cleaner environment. A lot of change propelled by a little stuff. Our last story takes us back to Gujarat, where a vast majority of India's salt comes from. In Gujarat, almost 75% of total Indian salt is being produced. In Gujarat, climatic conditions are very conducive. We have very, good sunny days. Rainfall is less, and there are no frequent cyclones. So that's how, the Gujarat climate is very favorable for salt production. A community of salt workers, known as the Agariyas, labor away making salt from tidal water. It is hard work. First, they need to dig wells to pump out the highly saline groundwater from the lake of brine that lies 40 feet below the crust. This brine is then directed into square-shaped salt pans. To get the pans ready, the earth needs to be packed and leveled so that the brine does not seep back. The natural process of evaporation then removes the water and leaves behind the salt. Once the first layer of salt is formed, it is scraped with heavy wooden rakes. The salt farmers continuously rake the salt to develop smaller crystals, which will fetch a higher price, and pile it onto the sides of the pans to be collected later. Every 15 days, an average of 12 to 15 tons of salt is collected and sent to salt companies and chemical factories across the country. The quality of Indian salt is, not as good as like Australia and Mexican countries. The reason being, the people are not following scientific practices at many places. The method of preparation is somewhat, manual in many areas, and the traditional practices are being followed. Now there are two issues in this process. One, the quality of salt could be better. Second, diesel, which is a big pollutant, is often used to pump the water. To address this, scientists at the CSIR Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, a premier salt research institute, have worked on ways of bringing in solar technology and other techniques to improve the salt production in this area. They brought in solar pumps. These brought an economic return for the farmers because they're more cost effective. The clean technology also reduced particle matter and carcinogens from the area. Other improvements in mechanization and technology ensured that the quality of salt also improved. With the intervention of CSMCRI, now those marginal salt producers are producing, grade 1 salt, BIS grade 1 salt, requires 99.5 weight % of sodium chloride purity. These new technologies have boosted the livelihoods of the Agariyas. Earlier they are getting around 150 rupees from the 1 ton of salt. Now they are getting from the industrialist around 350 rupees per ton salt. The learnings from Gujarat have already been implemented in other parts of the country like Rajasthan. They can be further used in communities across the country. Clean energy models like this can work as a model of change for millions of people across our nation. Science and innovation have always been harbingers of change. And these stories of communities with access to enhanced livelihoods, better water, and cleaner air are just examples of how science can be inclusive and create better lives.
विज्ञान किसी भी देश के विकास का आधार होता है, लेकिन विज्ञान में ज्यादा से ज्यादा लोगों की रुचि बढ़े, इसके लिए इसे प्रयोगशाला से निकालकर आम लोगों के बीच ले जाना बहुत जरूरी है। दिल्ली की एक छात्रा अनन्या सिंह ने माइक्रोस्कोप जैसे भारी भरकम और महंगे उपकरण का एक ऐसा विकल्प खोज निकाला है जिसे घर पर ही आसानी से बनाया जा सकता है और विज्ञान के नए नए प्रयोग किए जा सकते हैं। देखिए विज्ञानवीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। संगीत की शौकीन अनन्या को बचपन से ही विज्ञान में काफी रुचि थी। अपने घर पर भी वो खेल खेल में विज्ञान के प्रयोग करती रहती थी। अनन्या दिल्ली के सालवान पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर में 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। एक बार वो स्कूल के ट्रिप पर किसी गांव में गई। वहाँ पर हम लोगों ने जो विलेज थी उसके स्कूल में देखा कि जितने भी बच्चे थे उन सबको टीचर्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके बता रहे थे। मैंने अपने स्कूल में खुद सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स मैंने माइक्रोस्कोप में देखे थे। ये बात अनन्या के दिल में घर कर गई। वापस आकर अनन्या ने इस बारे में काफी विचार किया और फैसला किया कि वो एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाएंगी जो बहुत ही मामूली कीमत में हर किसी को वैज्ञानिक प्रयोग करने और विज्ञान को नजदीक से समझने की आजादी दे सके। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। अनन्या ने शुरुआत की माइक्रोस्कोप की बनावट और उसके काम करने के तरीके को समझने से। इस काम में उनकी मदद की उनके स्कूल की टीचर्स ने। एक माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी दरअसल वो यंत्र होता है जिसकी मदद से उन छोटी से छोटी वस्तुओं को भी आसानी से देखा जा सकता है जिन्हें आंख से देखना संभव नहीं होता है। माइक्रोस्कोप में कम फोकस दूरी का एक लेंस होता है जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। जब किसी छोटी वस्तु को इस लेंस के पास रखा जाता है तो इसका एक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यही प्रतिबिंब एक दूसरे बड़ी फोकस दूरी के लेंस यानी आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है और फिर ये बड़ी फोकस दूरी का लेंस वस्तु के आकार को मैग्नीफाई कर देता है जिससे उस वस्तु का बड़ा आकार देखने को मिल जाता है। माइक्रोस्कोप की बनावट को समझकर अनन्या ने पहले पीवीसी पाइप से माइक्रोस्कोप बनाने की कोशिश की, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं था। फिर अनन्या ने प्लास्टिक की खाली बोतल का इस्तेमाल करने का सोचा। क्या आपने कभी सोचा है कि बेकार दिखने वाली ये प्लास्टिक की बोतल और इस महंगे माइक्रोस्कोप में किसी भी तरह का कोई संबंध हो सकता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस प्लास्टिक की बेकार बोतल का इस्तेमाल करके एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जा सकता है जो इस तरह के माइक्रोस्कोप जैसा ही रिजल्ट दे सकता है? ये चीज कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये विज्ञान है और ये काम हमें करके दिखाएंगी दिल्ली की अनन्या सिंह। हमें ये प्लास्टिक की बोतल चाहिए और हम उसको हाफ में कट कर लेंगे। हमें ऐसी 2 बोतल चाहिए और इनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा चाहिए। इनके साथ इनके ढक्कनों में हमें होल कर देना है ताकि हम लोग इसमें लेंस फिट कर सकें। साथ ही साथ ताकि जो इमेज बने उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, हम लोग बाहरी लाइट को रोकने के लिए अंदर से न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके इसको ग्लू की सहायता से अंदर चिपका देंगे। कुछ इस तरीके से पूरी बॉटल को कवर करना है।
इससे क्या होगा, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव से लाइट आएगी उसमें कोई भी बाहरी लाइट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग ब्लैक पेंट कर देते हैं। इनको अंदर से ब्लैक पेंट करने के बाद अब हम लोग जो हमने होल कर रखा था कैप्स में, उसमें हम लोग, मेरे पास माइक्रोस्कोप लेंसेज हैं जो कि मैंने एक यूज्ड माइक्रोस्कोप से लिए हैं। ये वेस्ट लेंसेज हैं जो कि बहुत चीपली आपको सेकेंड हैंड मिल जाएंगे। इसमें हम लोग बॉटल कैप में हम लोग लेंसेज को फिट कर देंगे। ये हमारा आई पीस और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, और हम इन बॉटल कैप्स को इस पे दोबारा स्क्रू कर देंगे। ये जो 2 बॉटल हाफ्स हमारे पास रेडी हो गए हैं, अब इनको हम बस साथ में ऐसे फिट कर देंगे रबर बैंड्स की मदद से या किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, तो ये हमारा प्लास्टोस्कोप रेडी हो जाएगा। हमने इस तरीके का एक प्लास्टोस्कोप पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा जब हम इसको फिट कर देंगे। कोर्स ट्यूनिंग के लिए हम इसको, ये बॉटल को ऐसे रोटेट करके कोर्स ट्यूनिंग कर सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग ऑब्जेक्टिव और जो हमारा आई पीस है उसमें ऐसे बॉटल को, कैप को रोटेट करके, तो ये बहुत मिलीमीटर्स पे डिस्टेंस में चेंज आएगा, जिसकी वजह से फाइन ट्यूनिंग होगी। हमने इसको स्टैंड, हमें माइक्रोस्कोप्स के लिए एक स्टैंड चाहिए होता है, तो हमने जो फर्स्ट स्टैंड बनाया था ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हमने एक नीचे लाइट बल्ब अटैच कर रखा है। अगर लाइट ना हो तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर सनलाइट में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। हम इसको इधर फिट कर देंगे और कोई भी एक स्लाइड लेकर के यहाँ पे रख के इसको फोकस कर देंगे। प्लास्टिक की बेकार बोतल से बनाए गए इस बेसिक माइक्रोस्कोप को अनन्या ने नाम दिया है प्लास्टोस्कोप। अनन्या ने ये प्लास्टोस्कोप सिर्फ बनाया ही नहीं है, वो तरीका भी खोज निकाला है जिससे इसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है। हमने फ़ोन कैमरा को लेकर के इसके ऊपर यहाँ पे रख रखा है, बिल्कुल माइक्रोस्कोप के आई पीस पे, तो हमें ये दिख रहा है। अब हम जब फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो इमेज हमारी ये फोकस, या फिर जब तक हमें क्लियर इमेज नहीं बन जाती तब तक हम फाइन ट्यून करेंगे और ये हमें ऐसे एक इमेज मिल जाएगी। इस तरह से प्लास्टोस्कोप में जो कुछ दिखाई पड़ता है उसे एक साथ कई लोगों को दिखाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो माइक्रोस्कोप है ये 8,000 से 10,000 की कीमत का है। ये प्लास्टोस्कोप 200 से 300 रुपए का है सर। प्लास्टोस्कोप उन बच्चों को पिक्चर्स और फोटोज से एक नई दुनिया में ले जाएगा जो वो कभी नहीं देख पाते थे असलियत में। वो यहाँ पे सेल्स को डिवाइड करते हुए देख सकते हैं, वो कीटाणुओं को देख सकते हैं, दे कैन सी बैक्टीरिया। अनन्या प्लास्टोस्कोप में सुधार भी करती जा रही है, इसे कहीं भी ले जाने में आसानी हो। इसके लिए अनन्या ने इसे लकड़ी के बजाय मैकेनिकल स्टैंड में फिक्स कर दिया है और इसमें एक LED लाइट भी लगा दी है। जो ये सारे प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बच्चों को, आइरिस, इंस्पायर, जिज्ञासा, इनसे ये बैग तो बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की विजन के इन लाइन है। प्लास्टोस्कोप के लिए अनन्या को साल 2019 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई दूसरे मंचों पर भी अनन्या को सम्मानित किया जा चुका है। जब इस प्रोजेक्ट पे वो काम करना स्टार्ट किया उसने, तो समटाइम्स मैंने फील किया ये रात में 2-2, 3-3 बजे तक स्केच खींचना, उसको लेंसेज की कैसे हाइट एडजस्ट करनी है, क्या करनी है इन चीज़ों पे, और काफ़ी नेट के थ्रू स्टडी करना। लेकिन ये ज़रूर था कि बड़ा इनोवेटिव आइडिया लग रहा था कि क्या हम कभी, क्योंकि मैं भी साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने देखा है कि माइक्रोस्कोप का कोई इस तरह का बॉटल का अल्टरनेटिव ढूंढा जा सकता है, ये मेरे दिमाग में तो नहीं था। हमारे पूरे घर में ही समझिए फर्स्ट टाइम अनन्या है जिसने इतना अचीव किया है बच्चों में।
अब तक तो किसी ने अचीव नहीं किया था, तो बहुत प्राउड मोमेंट था। अनन्या ने प्लास्टोस्कोप के पेटेंट के लिए भी आवेदन कर दिया है। आगे चलकर भी वो विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। अनन्या का ये इनोवेशन न केवल ज्यादा से ज्यादा लोगों को विज्ञान के नए नए प्रयोग करने का मौका दे सकता है, बल्कि विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने में भी लेकिन विज्ञान से जुड़े विश्वसनीय कार्यक्रमों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस। धन्यवाद।